Hello students. Now in this video we are starting fourth D part, fourth question number fourth of exercise 4.2, and starting from D part we have already done A, B, C, and this is minus P by 3 is equal to 5. So 3 is in division, so we are to multiply to remove 3. हमें क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वेरिएबल को सेपरेट करना है. That variable is P here, so we are to multiplying by 3 on both sides. So minus P by 3 multiply 3 is equal to 5 multiply 3. So P minus 3 to minus 3, 3 to 3 cancelled out, minus P is equal to 5 3s are 15. Now we need only P here, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को भी हटाना पड़ेगा. माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो वेरी वेल ऑलवेज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस. सो हमें क्या करना चाहिए, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करें सो दैट माइनस पॉजिटिव बनाया जा सके. सो अगेन मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव सिंबल ऑन बोथ साइड, और यू कैन से मल्टीप्लाइंग बाय -1 by -1 on both sides. Okay, minus P is minus 15. P is equal to negative multiply negative positive, and P is equal to minus 15 is the answer. Now coming to E part, 3P by 4 is equal to 6. 3P by 4 is equal to 6. Again we are to remove this first, multiplying by 4 on both sides. 3P by 4 multiply 4 is equal to 6 multiply 4. 4 to 4 cancelled out. Now 3P is equal to 624. Now dividing by, because 3 is multiplied with P, now we are to divide by 3 on both sides. 24 by 3. 3 to 3. 3 8 is 24, and P is equal to 8 here. Now coming to F part, 3S is equal to -9. हमें क्या करना है, S वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3 is multiplied with S, so dividing by 3 on both sides. 3 multiplied by S divided by 3 is equal to -9 by 3. 3 to 3, S is equal to 3 3s are 9. So answer is S is equal to -3. This was F part. Now coming to Z part. 3S plus 12 is equal to 0. So first of all 12 is in addition, इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, then we can find the value of S. So to remove this, first of all we need to subtract, because 12 जो है एडिशन में है, तो हमें क्या लेना है, इसका अपोजिट सिंबल, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. So subtracting 12 on both sides, 3S plus 12 minus 12 is equal to 0 minus 12. 12 to 12 cancelled out. 3S is equal to minus 12. Now again we are to remove 3 from here. So 3 is in multiplication with S minus 12. So 2 dividing by 3 on both sides. 3 multiply S by 3 is equal to minus 12 by 3. 3 to 3 cancelled out. 3 4s are 12. So answer is S is equal to -4. Now coming to next part, H part. 3S is equal to 0. Here 3 is in multiplication, so we can divide by 3. Dividing by 3 on both sides.
3 मल्टीप्लाई एस बाई 3 इज इक्वल टू 0/3, क्योंकि हमने दोनों साइड्स में डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो आंसर इज ऑलवेज 0, सो एस इज 0 हेयर. नाउ कमिंग टू आई पार्ट, 2q इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 6. So to remove 2 from here we need to dividing by 2 on both sides. So 2 multiply q divide by 2 is equal to 6/2. 2 cancel out, 2 3 ja 6, q is equal to 3 here. Now coming to j part, 2q minus 6 is equal to 0. 2q minus 6, first of all we need to remove minus 6 from here. So to remove minus 6 we need to adding 6 on both sides. 2q minus 6 plus 6 is equal to 0 plus 6, 6 to 6 cancelled out, 2q is equal to 6, and q is equal to dividing by 2 on both sides. 2 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 6, हमें क्या किया, डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, आंसर इज q इज इक्वल टू 3. नाउ कमिंग टू k पार्ट, इन k पार्ट क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आंसर कैसे हटाना होगा हमें, 6 इज एन एडिशन, सो वी आर टू सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, 2q प्लस 6 माइनस 6, इधर 0 माइनस 6, एंड 6 to 6 cancelled out, 2q is equal to minus 6. Again 2 is in multiplication with q, so we need to remove 2 from here. Now dividing by 2 on both sides, 2 multiply q divide by 2 is equal to minus 6 divide by 2, 2 cancelled out, 2 3 ja 6 here, so q is equal to minus 3. Now q is equal to minus 3. Now in L part,